Hello friends, my topic is physiology of digestion and I have taken this topic from human physiology. Now, first point, what is digestion? The process of conversion of large and complex food molecules or organic molecules into simple and absorbable form is known as digestion. Actually, human beings show holozoic mode of nutrition, and in holozoic mode of nutrition, what we do, actually we take complex food organic molecule and that is unable to easily absorb inside our body, so it has to be converted into simple and absorbable form. So digestion क्या होता है? सिंपली लार्ज और कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना सो दैट इट कैन इजीली एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी इज नोन एज डाइजेशन. एंड डाइजेशन इज टोटली एंजाइमेटिक प्रोसेस. Enzymatic process means whole process of digestion takes place in the presence of enzyme. So what is enzyme? Enzymes are the biocatalysts that catalyze the reactions of biological origin. Actually enzyme क्या होते हैं? Enzymes are the chemical substance जो हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. एंड इट इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस. Digestion is the catabolic process and the meaning of catabolic process is breakdown reactions. Actually sum total of all the reactions that takes place inside our body या inside any living organism is known as metabolism. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है. मेटाबॉलिज्म दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म क्या होता है? बेसिकली ब्रेक डाउन रिएक्शंस. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है, CO2 और वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है. एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, वो ब्रेक डाउन होकर CO2 और वाटर बनाएगा, तो ये प्रोसेस कहलाएगा कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म. तो डाइजेशन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है, ये सिंपल फूड मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक रिएक्शन. एक दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म का पार्ट, उसको एनाबॉलिज्म कहा जाता है. एनाबॉलिज्म यानी बिल्डिंग अप ऑफ रिएक्शंस. फॉर एग्जाम्पल जैसे फोटोसिंथेसिस है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि CO2 और H2O को लेके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या होता है? प्लांट्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं. तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? बेसिकली इनऑर्गेनिक सिंपल मॉलिक्यूल से, जैसे कि CO2 और वाटर. तो CO2 वाटर लेके जब एक कॉम्प्लेक्स चीज बनाएंगे यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कहलाता है एनाबॉलिज्म. My topic is digestion. Digestion is the catabolic process because इस प्रोसेस में केवल कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल सिंपल फूड मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो रहे हैं. एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. As my topic is physiology of digestion, so I am not dealing with the structure of digestive glands or alimentary canal. Now I will only explain about the enzymatic action inside the alimentary canal. Food is taken in the mouth with the process known as ingestion. Mouth is also known as buccal cavity as well as oral cavity. And there are three pairs of salivary glands present in the human beings outside the buccal cavity. Buccal cavity के बाहर की तरफ तीन pair of salivary gland present रहते हैं जिसका secretion mouth के अंदर enter होता है. And salivary gland secrete saliva. Saliva basically क्या होता है? It is a mixture of water and electrolytes. और सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम. सलाइवरी अमाइलेज क्या है? अमाइलेज इज द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम और सलाइवरी अमाइलेज इज ऑल्सो नोन एज स्टाइलिन एज वेल एज अल्फा अमाइलेज. इट ऑल्सो कंटेन्स लाइसोजाइम. लाइसोजाइम इज एंटीबैक्टीरियल एजेंट and its pH is 6.8, that is saliva is slightly acidic in nature, and about 30% of the starch that we take as a food is hydrolyzed inside our mouth. Starch or carbohydrate, that is a complex food molecule, and it will convert into simple food molecule, that is maltose, in the presence of salivary amylase. And amylase, as I have already told you, amylase is the carbohydrate digesting enzyme. So माउथ के अंदर 30% स्टार्च का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, बाकी 70% will be digested, will be hydrolyzed inside the small intestine. After mouth, food enters into esophagus, and the partially digested food is known as bolus. What is the function of esophagus? It connects mouth to the stomach. Esophagus is also known as food pipe, and in esophagus there is a peristaltic movement, and peristaltic movement is the rhythmic contraction and relaxation of the food pipe so that bolus can easily pass from mouth to stomach. After that, stomach
Stomach is also known as gaster, and there are some secreting glands is present inside the stomach known as gastric glands. The stomach is C-shaped or J-shaped organ, and inside the stomach there is a secretion of three chemicals, that is hydrochloric acid, pepsin, and mucus. First, hydrochloric acid, that helps in killing harmful bacteria inside the stomach. And second most important function is it provides acidic environment, because pepsin can't work in the absence of acidic environment. So HCl helps in providing acidic environment for the proper functioning of pepsin. And the most important function of HCl is it converts the pepsinogen, that is inactive form of pepsin. Inactive form of pepsin is known as pepsinogen, that is converted inside the stomach in active form known as pepsin in the presence of HCl. Pepsinogen जब तक HCl के कांटेक्ट में नहीं आएगा, it will not convert it into active form, that is pepsin. Pepsin, that is protein digesting enzyme of the stomach. And last one is mucus. Mucus helps in protecting the inner lining of the stomach from HCl, because HCl is corrosive. So in absence of mucus, inner wall of the stomach get corroded, and it results in formation of gastric ulcers. After stomach, food enters into small intestine, but along with that food, the secretions of the liver and pancreas also enter into the small intestine, because these secretions help in further digestion of the food. Now liver is known as hepar. Liver secretes bile juices, and the main property of this bile juice is that it does not contain any enzyme. So bile juice also contain bile salts and bile pigments. There are two types of bile salt, sodium glycocolate and sodium taurocolate, and two types of bile pigments are also there, biliverdin and bilirubin. Biliverdin is green colored pigment and bilirubin is yellow colored pigment. Main function of the bile juice is emulsification of the fat, and emulsification of fat means the conversion of big fat molecules into small fat molecules. क्योंकि जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, दैट इज लाइपेज, वो बड़े फैट मॉलिक्यूल्स पे एक्शन नहीं करता है, वो सिर्फ छोटे फैट मॉलिक्यूल्स पे एक्शन करेगा बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज सरफेस एरिया. सो bile actually what does, it convert big fat molecules in the presence of bile salt into small fat molecules. And pancreas, it secretes pancreatic juice. Then pancreatic juice contains pancreatic amylase, that is carbohydrate digesting enzyme of intestine, and pancreatic lipase, it is fat digesting enzyme. Trypsin, it is protein digesting enzyme, and it also secretes bicarbonate ion that makes the acidic environment into alkaline, because food enters from stomach into the intestine, and in stomach, due to the presence of HCl, it has acidic environment. So because of that acidic environment, trypsin can't work on food molecules inside the intestine, so it has to convert into alkaline medium. Bicarbonate ion help करता है स्टमक से आए हुए फूड को alkaline environment में convert करने के लिए. Now small intestine. Small intestine is the main organ of digestion and absorption of food. It has a small finger-like structure that helps in increasing the surface area for absorption, and that is known as villi. Villi क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं. ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हेल्प करता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सो दैट ज्यादा से ज्यादा फूड मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे अट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा फूड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो सके. नाउ इन स्मॉल इंटेस्टाइन there is an enzyme named pancreatic lipase that comes from pancreas, and it helps in conversion of fat into fatty acid and glycerol, and this fatty acid and glycerol is the absorbable form. And another enzyme, that is pancreatic amylase, it converts carbohydrate into simple sugar. And another enzyme, that is trypsin, that is protein digesting enzyme of small intestine, and it converts protein into amino acids. Small intestine, there comes large intestine, and it is the main organ for absorption of water. Means small intestine में ज़्यादा से ज़्यादा फूड absorb होता है और ज़्यादा से ज़्यादा फूड डाइजेस्ट होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर absorption होता है.
आफ्टर दैट जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है दैट इज स्टोर्ड इन द rectum, and after large intestine that undigested food material or other waste material is ejected out as feces through the anus. And I hope it will prove helpful to you.